Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 10th and 11th of August. The session will be quite interesting and important students, so stay tuned with us till the end. In this video students, we are talking about Prime Minister Narendra Modi who have inaugurated the Bharat Ratna Dr. M.S. Swaminathan Sanitary International Conference that was held in New Delhi. Then we will be talking about some cabinet approvals. Next thing is cabinet has also approved of 4,250 crore rupees special development packages for the Assam and Tripura so that development can take place there. So all these things and many more will be discussed in this video. So stay tuned with us till the end. Do subscribe to our students and share the link of this video with your friends, cousins, relative, neighbors and let them know about this interesting platform. One more thing students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis. So do watch these videos. These are very beneficial for competitive exams and the content that we provide on daily basis is in a very refined and precise way. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs. First is Prime Minister Narendra Modi. This is his third term as the Prime Minister of India. He inaugurated Bharat Ratna Dr. M.S. Swaminathan Sanitary International Conference that was held in New Delhi. This person that is or very famous Bharat Ratna Dr. M.S. Swaminathan, he is also famously known by one more name, right? That is Father of Green Revolution. Father of Green Revolution. Right, so PM Modi, he inaugurated this Bharat Ratna M.S. Swaminathan Sanitary International Conference. Where this was held? It was held in New Delhi. It was held from 7th to 9th of August, and this was a 3-day long conference that was organized to commemorate the 100th birth anniversary. That is your Sanitary International Conference, right? That is the 100th birth anniversary of Dr. M.S. Swaminathan, also known as the Father of Green Revolution. This conference, it was held on a theme, students, that is Evergreen Revolution, Path to Bio Happiness. Right, here you can see inauguration of this Bharat Ratna Dr. M.S. Swaminathan Sanitary International Conference, that is 100th International Conference, or to commemorate the 100th birth anniversary, where this was held at the Pusa campus in New Delhi. And here a 100 rupees commemorative coin and a sanitary memorial stamp was launched. Award launched here was Global M.S. Swaminathan Award for Food and Peace, and it was instituted by the World Academy of Science, and the first recipient is Nigerian professor Edmola De Endenela. Correct, and he became the first recipient to receive this Global M.S. Swaminathan Award for Food and Price. Next is Union Cabinet has approved the budgetary support for MERITE scheme with an outlay of 4,200 crore rupees. I repeat, Union Cabinet, right, that is chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved the proposal for the implementation of a central sector scheme. Correct, that is MERITE, that is Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education Scheme. And here 275 technical institutions that comprise of 175 engineering institutions and 100 polytechnic institutions will be coming under this. Correct, and under this scheme we just saw that the Department of State of Union Territory handling the technical education sector will also be supported under this scheme. So what is the scheme? To support under the scheme 275 government and government aided technical institutions such as National Institute of Technology, State Energy Institution, Polytechnics, these will be coming, and it will be benefiting around 7.5 lakh students. So what we are talking about is the Union Cabinet approved the implementation of MERITE scheme. Full form here it is financial outlay 4,200 crore rupees for the time period 25-26 to 29-30, that is from FY26 till FY30. And here 275 government and government aided technical institutions will be coming into play. Next is cabinet approvals. Cabinet has approved 4,250 crore rupees special development package for the state of Assam and Tripura. What this will promote is, this will promote development in that particular region. And here for Assam, if we see 3,000 crore rupees, correct, and for Tripura it is 4,250 crore rupees. Correct, take a note of this, and then this is the total outlay here.
Next is Cabinet has approved 4,250 crore rupees special development package for the state of Assam and Tripura, and on addition here Government of Assam supplemented it with 3,000 crore rupees. So now the total outlay is 4,250 plus 3,000 crore, that is 7,250 crore. Here the development package, this will promote peace, rehabilitation and will focus on infrastructure and socio-economic development project. Here also the approval follows the success of previous Minister of State based initiative for Bodo and Karbi groups, which resulted in the enhancement peace in the particular region of Assam. Correct? Take a note of it. Then here you can see for Assam 500 crore rupees for Adivasi, 500 crore rupees for DNLSA, that is Dimasa Community Infrastructure, for this 500 crore rupees, and for ULFA, that is your United Liberation Front of Assam, for it 3,000 crore rupees has been, this is the package amount here. For Tripura 250 crore rupees for NLFTA. What is this NLFTA? It is your National Liberation Front of Tripura, that is Tripura. Right, so take a note of this. And how these packages will be coming into play in these two areas: it will enhance employment, skilling, education, healthcare, peace building and tourism boost. Next, MHI, that is Ministry of Heavy Industries, has extended Prime Minister E-Drive scheme tenure by 2 years from 31st of March to 31st of March 2028. That is for next 2 years from 2026 till 2028 it has been extended. Correct? And it is Ministry of Heavy Industries, they have announced this extension. What is PM E-Drive? PM E-Drive is your Pradhan Mantri Electric Drive Resolution. I repeat, Pradhan Mantri Electric Drive Revolution in Innovation Enhancement, that is PM Drive. Correct? PM Drive. So this scheme will be now for 2 years extended. Correct? That is from 31st of March 2026 till 2028. Here the focus is on 2-wheeler electric vehicles or 3-wheeler electric vehicles that will come into play, as we see that most of the travel by the goods, or we can say in the logistics sector, is by these. So if we make them electric, the pollution will be saved, as well as the amount of electricity that will be utilized here will be green. So it will be a win-win situation for us. Correct? And it is Ministry of Heavy Industries, under this it has brought this scheme, and this now has been extended to 2 years. Next is Cabinet approvals on 8th of August. If we look at the approval, that Union Cabinet, it is chaired by Prime Minister Narendra Modi, and they have, this Cabinet has approved the continuation of PMUY, that is Prime Minister or Pradhan Mantri Ujjwala Yojana consumers for FY26 to keep the LPG affordable for low income households. This scheme will have now involve a total expenditure of 12,000 crore rupees, and a subsidy of 300 rupees will be given for each 14.2 kilogram of cylinder, and this subsidy will be given for next 9 refills only, right? Not for more than that. And here you can see this scale will have a total expenditure of this and 300 rupees subsidy up to 9 refills. Take a note of this. Then apart from this, one more, remember, Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved a 30,000 rupees compensation to 3 public oil marketing companies, that is IOCL, Indian Oil Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited and Hindustan Petroleum Corporation Limited. So a subsidy or a compensation of 3,000 crore rupees has been approved from them. This compensation is for the losses they have incurred in supplying domestic LPG at regulated price. It will help these companies meet the key expenses. Right, take a note of this. Then the third approval, this is the companies here. Third approval is the construction of a 4-lane Marakkanam Puducherry highway, and it will be costing 2,157 crore rupees for this. So remember these 3 approvals. Next, Government e-Marketplace marks the 9th foundation day. Right, so we are talking about Government e-Marketplace, that is your GEP. Correct, and this is the National Public Procurement Portal, under which you can sell your products in bulk in India or outside India, between states. That will be removing the middleman, right? And it will be making better margins for both the sellers as well as the buyers here. Correct? So this is your Government e-Marketplace, and it is the 9th foundation day of it, that was observed on 9th of August 2025. This portal, it aligns with Prime Minister's vision of minimum government, maximum governance in connecting both the sellers and service providers across the country.
Take a note of this, right? And here it will be elimination. The key reform is basically for the elimination of the caution money for sellers, rationalization of vendor assessment fees, reduction in transaction charges, removing the middleman, and many more things. Next is India AI and NCG. They have launched the Catch Grant program to support the AI innovation for the cancer treatment. So India AI IBD, that is your India AI Independent Business Division under the Digital India Corporation of the Ministry of Electronics and Information and Technology, has announced the launch of Cancer Artificial Intelligence and Technology Challenge Grant Program, that is Catch program, in collaboration with the NCG, that is National Cancer Grade, established under the Department of Atomic Energy by the Government of India, right? And when this was launched, it was launched in August, on 2nd of August, and the application has been started from 2nd of August, and they will be open till 2nd of September. And grant of up to 50 lakh rupees per project will be given here, and further that grant can also exceed to 1 crore rupees if the solution that these programs, these companies will be providing are of up to the mark, right? So what is the purpose? It is to pilot and scale up the development of AI tools in cancer care settings across the NCG hospital network, right? And with the help of AI solutions here, better treatment and will be provided, and the careers, that is your cancer screening, diagnostics, treatment support will also be strengthened here with the help of artificial intelligence, because now the analysis of the reports will become quite easy and better output can be provided by the doctors to their patients with the help of artificial intelligence. Next, here you can see launch of the Catch Grant program, collaboration with India AI and National Cancer Grade, when on 2nd of August the application started till 2nd of September, and grants up to 50 lakh rupees per project will be extended to 1 crore rupees if the solutions are good. Then Catch full form is Cancer Artificial Intelligence and Technology Challenge, and the purpose here is to support the pilot and scale up the development of artificial intelligence tools in the cancer care settings across NCG hospital network. Next, Niti Aayog, they have launched the Work for Viksit Bharat portal for the skilled hiring. See, in today's world, we are seeing that there is a or it is being claimed that because of artificial intelligence, the job market will be disrupting, and only the skilled individuals will now sustain in the market, who will be journalists, right? Who will have a broader idea about how the tools will be used and how the market plays as a whole. So Niti Aayog, that is a policy think tank under the government of India, has introduced the Work for Viksit Bharat portal to recruit professionals for national development initiatives, and this portal aims to recruit professionals across sectors such as economics, big data, infrastructure, climate change, telecom, IT, supporting the Viksit Bharat growth vision. And with the help of this, the job employment will be provided, employments will be provided into the market, and with employment there will be market also good, right? Because if a country needs to grow, so the population there needs to work, and they need to be skilled about what is happening all around the world and what is the important skill set they require in that particular generation to grow. Then remember, there is one more related scheme, that is PM Viksit Bharat Rozgar Yojana, that will be creating 3.5 crore jobs by 31st of July 2027. Next is DARPG, that is your Department of Administrative Reforms and Public Grievances. They have partnered with RTS commissioners for the improvement of e-services under the NESDA issue guidelines for NAEG 2026. So let's take one thing first. DAPRG, they have partnered with RTS commissioners for the improvement of the e-services, and this electronic services are for NESDA. What is NESDA? National E-Governance Service Delivery Assessment. Correct. With this, what will happen is the sectors such as land, labor, finance, and environment, right? For them, here we will be seeing that the sharing of effective practices will be promoted, innovation will be promoted in the digital governance here, right? We will be seeing that new services will be coming into play that will be making the lives of the employees here will be much better, and better services will be provided here. Correct. And this is for the partnering with RTS commissioners. What is RTS? RTS is your rights to service commissioners of the states and union territories that will enhance the e-services. Correct. Take a note of this. Next is banking and finance. RBI has imposed 75 lakh rupees monetary penalty on ICICI Bank. So what is the amount? It is 75 lakh rupees, and it is for the violation of the guidelines on the valuation of the properties, empanelment of the valuers, and opening of the current accounts need for the discipline. Next
Next is BSNL and NRL. BSNL is your Bharat Sanchar Nigam Limited, and Guwahati Assam based NRL, that is your Numaligarh Refinery Limited. They have signed this MOU during the Industry 4.0 workshop for the CPSEs that were organized by the Ministry of Finance in Guwahati, Assam. Right? So BSNL and NRL, they have signed this MOU to implement India's first 5G CNPN through the Industry 4.0 adoption. Take a note of this. Correct? So what is this we are talking about? We are talking about BSNL, we are talking about NRL, we are talking about their MOU, right? And this was MOU is basically why, what is the reason this MOU was signed? For the implementation of the first 5G CNPN through Industry 4.0 adoption, right? What this will do is this will enhance the cyber security in simple terms. It will enhance the cyber security. It will promote artificial reality, virtual reality based trainings. It will promote real time Internet of Things, IoT applications in the market, right? So this is the aim of this particular MOU. Next, here you can see the purpose, event, why, and what this was an MOU between BSNL and NRL. Next is science and technology students. Skyroot Aerospace has conducted the static test of the Vikram 1 rocket, that is Kalam 1200. I repeat, Skyroot Aerospace Private Limited, they have successfully conducted the first static test of Kalam 1200, a solid rocket motor, the first stage of the Vikram 1 launch vehicle at the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. The test here marks a significant step in the development of Vikram 1 built by Skyroot Aerospace. So what we are talking about is, we are talking about the test of Kalam 1200 motor by Skyroot Aerospace, where this was tested at Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. This was developed by Skyroot Aerospace, named after the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, and this Kalam 1200, this is a part of Vikram 1 launch vehicle. Next is book students. Next is former Chief Justice of India D.Y. Chandrachud's debut book has been launched, that is Why the Constitution Matter. And debut book means this is the first time he has launched this book. So former Chief Justice of India D.Y. Chandrachud has authored his debut book, that is Why the Constitution Matters. It will be published by Gurugram, Haryana based Penguin Random House India by August 2025. And this book offers a comprehensive view of the relevance and transformative power of the Indian Constitution, portraying it as the foundation of democracy, justice, equality and liberty. Correct? And remember, Justice D.Y. Chandrachud is the 50th Chief Justice of India, or was the 50th Chief Justice of India. Next is important days. World Sanskrit Day, observed on 9th of August. This day is observed basically to create awareness across the globe of the full moon of the Hindu month of Shravana, that is Shravan Purnima, right? And we say Sawan in slang language, right? Or in normal language we say Sawan ka mahina, correct? And it is one of the oldest languages of India, Sanskrit, and we know that even many older granths, right, and they are written in Sanskrit. It is considered one of the oldest languages of the world. So 9th of August is observed as World Sanskrit Day, and Sanskrit week is also observed from 6th to 12th of August. Next, this Sanskrit language is also known as the language of the gods and also as the mother of all languages. Next is state news students. Chhattisgarh government has signed an agreement with NHPC for 1800 megawatt of PSP, that is your pumped storage project with a capacity of 1800 megawatt. I repeat, the government of Chhattisgarh along with the Chhattisgarh State Power Generation Company signed the agreement with NHPC Limited to develop two pumped storage projects with a capacity of 1800 megawatt. So that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be quite beneficial for your learning, and after this, students, we will be taking the homework section. Apart from this, students, remember one more important day, that is your World Tribal Day. When do we observe this World Tribal Day? This World Tribal Day is one also known as by the name, that is your International Day of the World Indigenous People. It is observed on 9th of August. Right? Your homework is to tell me what is the theme for this day. And now let's move to the homework section. Right? Move to the revision part and then homework section.
Bilateral swap agreement up to dash was signed between the Reserve Bank of India and Bank of Japan to enhance financial cooperation. So this bank swap agreement worth 75 billion dollar was signed between RBI and Bank of Japan. Next, in February, SEBI they have introduced a new framework for specialized investment fund SIF to address the gaps between mutual funds and portfolio management services in terms of the portfolio flexibility. Question asked is from which date will the new framework come into effect? It will be coming into effect from 1st of April 2025. Next, identify the new term deposit product launched by Federal Banks Limited to provide stable income for a period of 5 to 20 years for resident customers. It is annuity deposit. Correct. Customers have the flexibility to select their preferred payout frequency, that is monthly or quarterly or half yearly or annually, which each payout consisting of both primary, principal and interest earned. Next, S&P Global they have released S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2024 and the Carbon Disclosure Project making Carbon Disclosure Project ranking in Feb 2025. Question asked is which private sector bank in India was recognized as the highest rated bank in sustainability? It is Yes Bank. Next, in Feb, HDFC Bank Limited became the first domestic bank to trade 5 kilograms of gold on what? On Indian Bullion Exchange. Indian International Bullion Exchange. Next, Paytm partnered with which organization? They partnered with RBL Bank Limited to provide sound boxes and card machines to their merchants for easier and more efficient transactions. Next, in March, SEBI they have permitted all NBFCs, including HDFC, including your housing finance companies, to invest in security receipts, that are your SRs that are issued by the asset reconstruction companies. Next, mention the insurance company that recently launched child-focused insurance product, that is Smart Future Star and Smart Platina Young Achiever, to provide financial security for children, education and future expenses. It is SBI Life Insurance Company Limited. This is the company that have launched the child-focused insurance product, that is Smart Future Star and Smart Platina Young Achiever plan. Next, which private sector bank in India launched the project Hawk, that is Hawaii Anubhavi Kalyan Kendra, serving those who have served, right? This is the name of the project. It was launched in March 25 to support the Indian Air Force pensioners, veterans and their families. Which is that bank? It is HDFC Bank Limited. Next, mention the health insurance company that launched the Rise Health Insurance Plan in March, aimed at catering to the healthcare needs of the India's missing middle class. Right, so which is that health insurance company? It is Niva Bupa Health Insurance Company Limited. Next is Bank of Baroda. They have introduced BOB Global Women NRE and NRO saving account designed exclusively for the women NRIs. Question is what does the letter O stands for? NRO, that is your non-resident ordinary. Right, take a note of this. Next, identify the public sector bank that collaborated with Indian Army to extend Rakshak salary package to Army personals, veterans and Agniveers under the Agnipath scheme. Question asked is which is that public sector bank? It is Bank of India, BOI. Next, name the company that received $1.1 million in seed funding in March 2025 from Unleashed Capital Partners and CDM Capital to strengthen their technology and enhance debt recovery process. It is your Cred Resolution India Private Limited. Next, as per SEBI's new regulations for SME initial public offerings that was announced in March 25, what is the maximum allowed percentage for the offer for sale portion of the total IPO size? So, what is the maximum allowed offer for sale portion here? What it will be? It will be 20%. Next, identify the private sector bank that collaborated with Indian Army's Directorate of Indian Army Veterans and Common Service Centers to expand Project Naman, that is aimed at supporting Army veterans and their families. Right, so which is that private sector bank? It is HDFC Bank Limited. It will be in two phases that started from September 23 and the second phase just now started in March 2025. Next, Kuhu Finance, backed by Westbridge Capital, they have secured the RBI license to function as a non-banking finance company, that is NBFC, that will enable it to offer student loans of up to 2 crore rupees.
Next, name the institution that collaborated with Canara HSBC Life Insurance to offer credit life insurance solutions to home loan borrowers. It is GIC Housing Finance Limited. Next, in March, RBI and Dash jointly launched nationwide campaign to enhance financial security in India. It is National Center for Financial Education. Next, RBI, as per RBI's new framework for SROs, that is self-regulatory organizations in account aggregator ecosystem, what is the minimum net worth required within 1 year of the recognition of them as SRO? That is your 2 crore rupees. This is the minimum net worth requirement here. And this account aggregator system, this provides secure exchange of financial data between FIUs and FIPs, and it was initiated in 2016. Next, identify the company that became the first private sector reinsurer in India after receiving R2 license from IRDAI. Which is that company? It is Value Ethics Reinsurance Company Limited. This is the first private reinsurer in India. Next, Brisk Payment Exchange, that is Brisk Pay, they have received in principle approval from RBI in March to act as a payment aggregator for Dash transactions under Payment and Settlement Act of 2007. It is your payments aggregator for cross border, right? One is your payment aggregator, one is your payment aggregator cross border. This is within the international countries, right? You can transfer within different parts of the world. Payment aggregator is just for nation, right? Within the country, within the states, you can make transactions. Next, in March, RBI imposed a monetary penalty of JM Financial Products Limited for non-compliance with NBFC regulations. What was the monetary penalty imposed on GMFL? It was 3.1 lakh rupees. Next, identify the public sector bank that entered into a strategic co-lending partnership with Piramal House Capital and Housing Finance Limited in March to boost credit access for underserved rural and semi-urban regions in India. This will be your Punjab and Sindh Bank. Next, what is the revised timeline set by SEBI in March 25 for completing right issues effective from 7th of April 2025? It is 23 days. Next is in March, RBI signed a memorandum of understanding with Bank of Mauritius, right, to promote the use of local currencies for cross-border transactions. Correct? Take a note of this. This will enhance the bilateral trade between India and Mauritius. Next, identify the digital platform that collaborated with SBI Mutual Fund to launch Jan Nivesh, a 250 rupees SIP initiative that is aimed at promoting small ticket investments in India. This is your Paytm. Next, Paytm Money Limited, they received the certificate of registration from SEBI under which category? It was under research analyst category. Right option is option 3rd. Next is identify the program launched by the Asian Development Bank on 17th of March to enhance local capital markets, boost entrepreneurship and support sustainable economic growth in the Pacific markets. So, which is that program? It is your Frontier Seed program. This is an initiative to provide funding and technical assistance to businesses with potential that is transformative. Next is name the digital platform that partnered with SEBI in March to help address the issue of unclaimed assets in the securities market. It is your DigiLocker that has partnered with SEBI here for this initiative. Then next is what is the revised minimum investment threshold for zero coupon, zero principal instruments on social stock exchange set by SEBI in March to make it more affordable for small investors. So it is 1000 rupees minimum investment threshold for zero coupon, zero principal. Next, what is the which of the following individuals was not appointed as a member of the IAC, that is Insurance Advisory Committee by IRDAI? So Sanjeev Sanyal was not appointed here. Next, name the mobile application launched by Bank of Baroda for corporate customers using Baroda Cash Management Service. It is Baroda M DigiNext. Next is how much penalty that the RBI imposed on IDBI Bank in March for violating the rules under Foreign Exchange Management Act of 1999. This is 36.3 lakh rupees, right? So on IDBI it is 36.3 lakh rupees and on Citibank it is 30.28 lakh rupees. Next is our homework section, students. First question is which is the cleanest city? Cleanest city under Swachh Sarvekshan for 24-25. Then second question, tell me Tracer's mission.
What is the aim of this research mission? Launched by whom and what is the full form? I think day before yesterday also I gave this question, but hardly few students commented it. So I need to say maximum participation. This is important. Then third question we are talking about is name that exercise that was held between India and Singapore recently. It was held in Jodhpur. Name that exercise and the edition of that exercise and who took part in this exercise from India. Fourth question, tell me recently, if I ask you who became, or tell me recently what is the rank of India in the World University Games and which university secured the top position here and which country secured the top position in the medal tally. So these are your 4 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students. Okay, one more question. How much tariff USA has imposed on India recently and which sectors are exempted from it? Tell me that also. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, आज की वीडियो में 10 और 11 अगस्त के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे. आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. इन्होंने भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, इनकी सैनिटरी 100th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी इनॉग्रेट किया. देन इसके बाद हम कुछ यूनिट कैबिनेट के अप्रूवल्स देखेंगे एंड अभी रिसेंटली असम एंड त्रिपुरा के लिए भी यूनियन कैबिनेट के द्वारा कुछ अमाउंट यहाँ पे अप्रूव किया गया है, उसको डिस्कस करेंगे. तो ऑल दीज थिंग्स एंड मेनी मोर हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा. स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कर लेना हमें और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव, नेबर सभी के साथ. ऑल्सो हम सुबह डेली बेसिस पे 5 बजे ये डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज अपलोड करते हैं, तो इनको देखा करो जरूर से. काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा इनसे. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने इनॉग्रेट किया भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन सैनिटरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को न्यू दिल्ली में. सैनिटरी का मतलब होता है 100 ईयर्स यहाँ पे पूरे हुए हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन की बर्थ एनिवर्सरी को, उनको कमेमोरेट करते हुए यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट की गई, जो कि 3 डे लॉन्ग कॉन्फ्रेंस है. 7 से लेकर 9 अगस्त तक होगी एंड 100 बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे ये लॉन्च की गई. करेक्ट, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है इनको. एंड यहीं पे याद रखेंगे एवरग्रीन रेवोल्यूशन पाथ टू बायो हैप्पीनेस, ये यहाँ पे थीम रहेगी, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं. यहाँ पे पूसा कैंपस में इसको इनॉग्रेट किया गया एंड 100 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन यहाँ पे लॉन्च किया गया एंड ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड्स को लॉन्च किया गया फॉर फूड एंड पीस वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा एंड नाइजीरियन प्रोफेसर एडमोला एंडलिन, राइट, ये यहाँ पे पहले रेसिपिएंट रहे इस अवार्ड के. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे. यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया बजटरी सपोर्ट ऑफ MERITE स्कीम विद एन आउटले ऑफ 4200 करोड़ रुपए. ये MERITE क्या है? बेसिकली ये है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन स्कीम, जहाँ पे 275 टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, जो कि 175 इंजीनियरिंग एंड 100 पॉलिटेक्निक्स यहाँ पे मिलकर आपके 275 होते हैं एंड इनके ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा. एंड इससे हम देखेंगे ऑलमोस्ट 7 लाख इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को बेनिफिट देखने को मिलेगा. करेक्ट, इसी के अंदर आप देखेंगे एम क्या रहेगा कि क्यों ऐसा करा जा रहा है, राइट, रीज़न क्या है, ताकि टेक्निकली स्किल्ड हो सके. 7.5 लाख बच्चों को सपोर्ट मिलेगा ताकि बच्चे टेक्निकली स्किल्ड हो सके, राइट, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल सके, टेक्निकल एजुकेशन मिल सके. एंड आज के टाइम में जो स्किल्स ज़रूरी है मार्केट में सस्टेन करने के लिए, जॉब्स को लेने के लिए, वो उन तक पहुँच सके. नेक्स्ट, फिर कैबिनेट ने अप्रूव किया 4250 करोड़ रुपए का स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज फॉर असम स्टेट एंड त्रिपुरा स्टेट, राइट, इन दोनों के लिए. एंड इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा यहाँ पे एडिशनली 3000 करोड़ रुपए यहाँ पे एलोकेट किए गए, तो 7250 करोड़ रुपए का टोटल बजट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है. करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस. फिर इसी के अलावा अगर हम देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो पहला जो स्कीम थी जैसे असम पैकेज अगर हम देखें, तो जिसमें से
5,000 करोड़ रुपए आदिवासी के लिए, 500 करोड़ रुपए DNLA। ये DNLA क्या है बेसिकली, दिमासा कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। देन फिर इसके अलावा 250 करोड़ रुपए NLFT जो है आपका नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एजुकेशन, हेल्थ, पीस बिल्डिंग, टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए ये पैसा लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। इन्होंने एक्सटेंड किया PM E-ड्राइव स्कीम को, 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। 31 मार्च 2026 तक थी, अब इसको 2 साल से एक्सटेंड करके 31 मार्च 2028 तक कर दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इन्होंने अनाउंस किया ये एक्सटेंशन। PM E-ड्राइव की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहेंसमेंट। 2 साल तक एक्सटेंड किया इसको 31 मार्च 2028 तक, राइट। यहीं पे बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रक्स, एम्बुलेंसेज, राइट, जो 2 व्हीलर व्हीकल्स हो गई इलेक्ट्रिक की, 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई, इनको प्रमोट करने का यहाँ पे काम किया जाएगा। देखो इससे एक और बेनिफिट देखने को मिलेगा। एक तो हमारी जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, वो कम होगी। दूसरा, जो हम पॉल्यूशन क्रिएट होता है इन लॉजिस्टिक व्हीकल से, राइट, बेसिकली ये लॉजिस्टिक व्हीकल हो गई, इनसे जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो भी अब कम हो जाएगा, क्योंकि ये अब इलेक्ट्रिक मोड पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो हमारा जो पॉल्यूशन है, जो एनवायरनमेंट है, वो भी क्लीन होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कैबिनेट अप्रूवल्स की। 8 अगस्त के कैबिनेट अप्रूवल्स देखते हैं। तो डायरेक्ट सबसे पहले आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दूसरे जो सबसे पहला अप्रूवल आ जाता है वो है कंटिन्यूएशन ऑफ द LPG सब्सिडी फॉर PMUY कंज्यूमर्स फॉर FY26। ये PMUY क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, राइट। एंड इस स्कीम के अंडर 12,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर होगा, जिसपे 300 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी पर सिलेंडर ऑफ अप टू 9 रिफिल्स पर ईयर। एंड यहाँ पे 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पे ये सब्सिडी मिलेगी। तो पहली आपका अप्रूवल ये हो गया। दूसरा आ जाता है कंपनसेशन टू ऑयल कंपनीज फॉर डोमेस्टिक LPG सप्लाई लॉसेज। एंड IOCL, BPCL एंड HPCL, इन कंपनीज को यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। 30,000 करोड़ रुपए की ये सब्सिडी रहेगी। तीसरा आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन मरक्कनम पुडुचेरी हाईवे, जहाँ पे कॉस्ट रहेगी 2,175 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, ये मार्क करते हैं 9th फाउंडेशन डे को। तो जेम क्या है बेसिकली, एक फॉर एग्जांपल लेके चले तो 2 स्टेट के बीच में बिना किसी मिडलमैन के, प्रॉपर क्वालिटी चेक के साथ, प्रॉपर प्राइसिंग के साथ यहाँ पे ट्रेड फ्लरिश हो सके एंड 2 स्टेट्स अच्छे से आमने सामने, जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स को मिलाया जा सके डिजिटली, राइट। एंड इसे मिडलमैन एलिमिनेट होते हुए देखेंगे। तो गवर्नमेंट ने प्रमोट करती है ये गवर्नमेंट मार्केट प्लेस को। इसका 9वां फाउंडेशन डे हमें देखने को मिला 9 अगस्त 2025 को, राइट। इसकी थीम याद रखेंगे, ईजी एक्सेस एंड इंक्लूजन, ईजी एक्सेस एंड इंक्लूजन, ये यहाँ पे इसकी थीम रहेगी, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया AI, जो कि है इंडिया ए इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन। इन्होंने एंड NCG है आपका, NCG क्या होता है आपका, नेशनल कैंसर ग्रिड। इनके द्वारा कैच ग्रांट प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये बेसिकली एक तरीके की हैकेथॉन ही रहेगी, जहाँ पर हम देखेंगे कि कई सारी टीम्स आएंगी एंड AI को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, इससे बेटर रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं, बेटर सॉल्यूशंस दे सकते हैं, रिसर्च एंड डाटा कलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे टेक्नोलॉजी हम फर्दर इनको यूज़ करके बना सकते हैं, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना सकते हैं AI की मदद से। इसीलिए यहाँ पे ये कैच ग्रांट को लॉन्च किया गया। कैच है आपका कैंसर AI एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज। इसके अंदर कई सारी कंपनीज आएंगी एंड जो बेस्ट कंपनी होगी वहाँ पे 50 लाख रुपए का उनको ग्रांट देखने को मिलेगा, जो कि फर्दर अगर उनका काम सेटिस्फैक्ट्री लगता है, गुड रिस्पॉन्स आता है, बेटर आउटपुट आता है, तो फर्दर उस ग्रांट को 1 करोड़ कर दिया जाएगा, राइट। एंड इसके लिए एप्लीकेशन 2 अगस्त से शुरू होंगी 2 सितंबर तक। नेक्स्ट आ जाते हैं, नीति आयोग ने लॉन्च किया वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल को फॉर स्किल्ड हायरिंग। इससे क्या होगा, आज के युग में जो भी इंडस्ट्री की डिमांड है, अब क्योंकि हम देख रहे हैं AI की डिमांड बढ़ती जा रही है, बोला जा रहा है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जो IT प्रोफेशनल्स हैं, उनकी डिमांड कहीं ना कहीं कम होती जा रही है एंड जो एजेंट्स हैं वो टेक ओवर कर लेंगे इनको एंड इनकी जॉब्स रिप्लेस होती हुई दिखेगी, क्योंकि कोडिंग एक ऑटोमेशन की तरफ जाता हुआ हमें दिखेगा आने वाले टाइम में, राइट। तो जो कि कितनी डिमांड में स्किल्स होती थी कुछ टाइम पहले तक, आज वो हम देख रहे हैं वो एलिमिनेट होती हुई दिख रही है AI की बदौलत। तो AI को जो यूज़ कर सकेंगे, जो AI के मॉडल्स को रन कर सकेंगे, जो उनको ट्रेन कर सकेंगे, जो उन सॉफ्टवेयर्स को रन कर सकेंगे जिसमें AI है, उन लोगों की डिमांड हमेशा बनी रहेगी एंड वो स्किलिंग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए स्किलिंग के ऊपर इंडिया में काम किया जा रहा है और इसीलिए यहाँ पे ये पोर्टल लॉन्च किया गया कि जो स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं, राइट,
क्योंकि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स देख रहे हैं जो लॉन्च हो रहे हैं, तो उनके बेसिस पे फिर जो स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं उनको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग डाटा, इकोनॉमीज एंड क्लाइमेट चेंज, टेलीकॉम, आईटी, इसमें यहाँ पे लोगों को जॉब देते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं DARPG। इन्होंने पार्टनर किया RTS कमिश्नर्स के साथ फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ई सर्विसेज अंडर NESDA एंड यहाँ पे गाइडलाइंस लॉन्च की गई 2026 के लिए। देखो मेन एम क्या है यहाँ पर कि कैसे हम जो आप हमारी सर्विसेज डिलीवरीज होती हैं, इलेक्ट्रिक सर्विसेज डिलीवरीज हैं, उनको स्ट्रेंथन करना, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरीज हैं उनको स्ट्रेंथन करना अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट वे फॉरवर्ड के अंदर, राइट। तो बेटर सर्विसेज लोगों तक पहुँच सके, वो बेसिक यहाँ पे मेन एम रहेगा इसका। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। RBI ने इम्पोज की पेनल्टी ऑफ 75 लाख रुपए ऑन ICICI बैंक। किस लिए? वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज गलत लगाई, एम्पैनलमेंट ऑफ द वैल्यूअर्स एंड ओपनिंग ऑफ करंट बैलेंस गलत यहाँ पे देखने को मिला। एंड इन सब चीज़ों की बदौलत यहाँ पे RBI के द्वारा 75 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई है ICICI बैंक पे। एंड ICICI बैंक ही वो बैंक है जिन्होंने अपना जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे जो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो 50,000 रुपये कर दिया गया है। काफ़ी बड़ा ये स्टेप देखने को मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं BSNL एंड NRL। BSNL है भारत संचार निगम लिमिटेड, ये न्यू दिल्ली बेस्ड है। एंड NRL है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ये असम गुवाहाटी बेस्ड है। इनके द्वारा यहाँ पे MOU साइन किया गया ड्यूरिंग द इंडस्ट्री 4.0 वर्कशॉप फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इन गुवाहाटी, असम, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस स्टूडेंट्स। अब देखो इससे होगा क्या, इस MOU से हमारी जो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है ना मेन, वहाँ पर हमें काम होता हुआ दिखेगा। साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने का यहाँ पे काम किया जाएगा ताकि अटैक्स हमारे सेक्टर्स पे कम से कम हो सके, राइट। फिर ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी के ऊपर काम किया जाएगा। फिर रियल टाइम इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसेस के ऊपर काम किया जाएगा, एप्लीकेशंस के ऊपर काम किया जाएगा एंड ऑटोमेशन को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं MOU साइन किया गया BSNL एंड असम गुवाहाटी बेस्ड NRL के द्वारा। इंडिया का पहला CNPN टेक्नोलॉजी को बनाने की बात की गई एंड इंडस्ट्री 4.0 वर्कशॉप्स यहाँ पर देखने को मिली थी। मूविंग ऑन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्काईरूट एरोस्पेस, इन्होंने कंडक्ट किया स्टैटिक टेस्ट ऑफ विक्रम-1 रॉकेट कलाम 1200 का। ये कलाम 12 रॉकेट को कहाँ पे 1200 रॉकेट को कहाँ पे टेस्ट किया गया? ये था पहला स्टेज ऑफ द विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर में टेस्ट किया गया इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। एंड ये आपका कलाम 1200 आपके विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल का ही पार्ट देखने को मिलता है। एंड कलाम आप देख सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनकी नेमिंग के बिहाफ पे इसकी नेमिंग की गई। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर। एंड वन मोर थिंग, इसको टेस्ट किसके द्वारा किया गया? स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर्स पर आते हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, इनकी डेब्यू बुक आई है। डेब्यू बुक मतलब इनकी पहली बुक यहाँ पे लॉन्च की गई है, जो कि है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। इसको पब्लिश किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा बाय अगस्त 2025। एंड ये बुक आपकी रेलेवेंस एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यहाँ पे डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी की बात करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वन मोर थिंग यहीं पे याद रखेंगे, जो कि जो ऑथर हैं डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, ये 50वें चीफ जस्टिस थे इंडिया के। नेक्स्ट वर्ल्ड संस्कृत डे ऑब्जर्व किया जाता है 9 अगस्त को। संस्कृत जो कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, राइट। कई सारे हमारे ग्रंथ पुराने और संस्कृत में लिखे गए हैं। संस्कृत के ऊपर रिसर्च PhD की जाती है, राइट। यहीं पे अगर हम देखें इसकी, तो वर्ल्ड संस्कृत डे का ही अगर हम बात करें, ये तो हो गया 9 अगस्त को। अगर मैं बात करूँ संस्कृत वीक की, तो 6 से लेके 12 अगस्त तक ये हम ऑब्जर्व करते हैं संस्कृत वीक। एंड यहीं पे इसी को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस के नाम से भी जानते हैं एंड लैंग्वेज ऑफ गॉड्स के नाम से भी इसको यहाँ पर हम जानते हैं, राइट। इसी के अलावा एक और यहाँ पे आप याद रखेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल। आई रिपीट, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, राइट। इसी को हम वर्ल्ड ट्राइबल डे के नाम से भी जानते हैं। एंड ये 9 अगस्त को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, जिसकी थीम रहेगी इंडिजीनियस पीपल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंडिंग द राइट्स, शेपिंग फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड संस्कृत डे की बात कर रहे थे, तो 9 अगस्त को प्रमोट संस्कृत एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। 6 से 12 अगस्त वर्ल्ड संस्कृत वीक एंड पहली बार 1969 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। एंड ये क्लासिकल लैंग्वेज है, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा 2005 में दिया गया।
इसके बाद आता है स्टेट न्यूज़ के ऊपर स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया विद एनएचपीसी 1800 मेगावाट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट का। 1800 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी रहेगी, छत्तीसगढ़ में साइन किया गया ये विद एनएचपीसी, राइट, एंड ये 1800 मेगावाट ये रहेगा, तो ये अमाउंट ज़रूर याद रखेंगे, करेक्ट। यहीं पे अगर हम देखें तो लोकेशन क्या रहेगी, कोरबा एंड कुरुंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड एनएचपीसी के द्वारा पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फिर आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, एंड रिवीजन पार्ट के बाद हम चलेंगे आपके होमवर्क सेक्शन की तरफ। उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कि है मर्चेंट लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम। इसमें क्या है, आपके लोगों जो भी यहाँ पे इस ऐप को यूज़ करेगा जो कि है बीओबी मर्चेंट एप्लीकेशन, उनको कैशबैक मिलेगा इन टर्म्स ऑफ सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो किसके द्वारा, बीओबी किससे हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऐसे भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बायलेटरल स्वैप अग्रीमेंट अभी साइन किया गया। कितने अमाउंट का ये बायलेटरल स्वैप अग्रीमेंट था, $75 बिलियन का था, जो कि आरबीआई इंडिया एंड बैंक ऑफ जापान के बीच में हो, ताकि फाइनेंशियल कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद आ जाते हैं सेबी, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया नया फ्रेमवर्क फॉर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड टू एड्रेस द गैप्स बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस डेट से लेके किस डेट तक यहाँ पर आपको ये नया फ्रेमवर्क लागू हो जाएगा। तो किस डेट से लागू होने वाला है, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द न्यू टर्म डिपॉजिट, जो कि लॉन्च किया गया फेडरल बैंक के द्वारा टू प्रोवाइड स्टेबल इनकम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 20 ईयर्स ऑफ रेजिडेंट कस्टमर्स। तो ये है एन्युइटी डिपॉजिट, ठीक है, ये एक नया टर्म डिपॉजिट है। इसके बाद आ जाते हैं S&P ग्लोबल, इन्होंने रिलीज किया S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2024 को एंड द कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट रैंकिंग इन फेब 2025। पूछा जा रहा है किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया एज द हाईएस्ट रेटेड बैंक इन सस्टेनेबिलिटी। तो वो है येस बैंक को हाईएस्ट रेटेड बैंक इन सस्टेनेबिलिटी घोषित किया गया है। एंड अभी येस बैंक में किस कंपनी ने अपना स्टेक सेल किया है एंड किसने बाय किया है, ये आप होमवर्क सेक्शन आपका नीचे मुझे बताओ। नेक्स्ट, HDFC बैंक लिमिटेड, इन्होंने ये वो पहला डोमेस्टिक बैंक बन गया जिन्होंने ट्रेड किया 5 किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड। कहाँ पर, तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पे इन्होंने यहाँ पे ट्रेड किया, जो कि जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है। नेक्स्ट, पेटीएम ने किनके साथ पार्टनर किया ताकि साउंड बॉक्सेस एंड कार्ड मशीन्स को प्रोवाइड किया जा सके टू द मर्चेंट्स फॉर ईजियर एंड मोर एफिशिएंट ट्रांजैक्शंस। तो वो आरबीएल बैंक के साथ इन्होंने यहाँ पे पार्टनर किया है। नेक्स्ट, सेबी ने अभी परमिट किया एनबीएफसीज को इंक्लूडिंग एचएफसीज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कि वो इन्वेस्ट कर सकें किसमें, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में, जो कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के द्वारा इशू की जाएंगी। नेक्स्ट, उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया चाइल्ड फोकस्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो कि है स्मार्ट फ्यूचर स्टार एंड स्मार्ट प्लेटिना यंग अचीवर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन एंड फ्यूचर एक्सपेंसेस। तो किसके द्वारा, कौन सी है वो इंश्योरेंस कंपनी, वो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने इंडिया में लॉन्च किया प्रोजेक्ट हॉक, जो कि है हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र सर्विंग दोज हु सर्व्ड, राइट। तो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स पेंशनर्स, वेटर्न्स एंड उनकी फैमिलीज को हेल्प करने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए ये लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, HDFC बैंक लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया राइज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिसका एम रहेगा कि हेल्थ केयर नीड्स जो इंडिया की है ऑफ द मिसिंग मिडिल क्लास, उनको यहाँ पे कैटर किया जा सके। तो ये है नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बीओबी ग्लोबल एनआरई एंड एनआरओ सेविंग अकाउंट को। पूछा जा रहा है कि जो ये एनआरओ में ओ है ये किस लिए स्टैंड होता है। एनआरओ होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी एंड एनआरई होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल। तो यहाँ पे ओ पूछा गया है, तो ऑर्डिनरी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पब्लिक सेक्टर बैंक जिन्होंने कोलैबोरेट किया है इंडियन आर्मी के साथ ताकि रक्षक सैलरी पैकेजेस को यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सके टू आर्मी पर्सनल्स, वेटरन्स एंड अग्निवीर्स अंडर अग्निपथ स्कीम के अंडर। तो कौन सा वो पब्लिक सेक्टर बैंक रहेगा, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने $1.1 मिलियन रिसीव किए इन सीड फंडिंग मार्च में फ्रॉम अनलीश कैपिटल पार्टनर्स एंड सीडीएम कैपिटल टू स्ट्रेंथन देयर टेक्नोलॉजी एंड एनहेंस डेट रिकवरी प्रोसेसेस। तो वो है क्रेड रेजोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं एज पर सेबीज न्यू रेगुलेशंस फॉर एसएमई इंडिया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स अनाउंस्ड इन मार्च, मैक्सिमम अलाउड परसेंटेज फॉर ऑफर फॉर सेल पोर्शन ऑफ द टोटल आईपीओ साइज कितना रहेगा, तो 20% यहाँ पे अलाउड है, मैक्सिमम अलाउड परसेंटेज फॉर द ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट
आइडेंटिफाई द पब्लिक सेक्टर बैंक जिन्होंने कोलैबोरेट किया इंडियन आर्मी के डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स एकेडमी के साथ, ताकि प्रोजेक्ट नमन को एक्सपेंड किया जा सके, जिसका एम है कि वेटरन्स, आर्मी वेटरन्स एंड उनकी फैमिलीज को यहाँ पे बेटर सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके। तो ये है HDFC बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट कुहू फाइनेंस, ये एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म रहेगा। इन्होंने ये बैक्ड है बाय वेस्ट ब्रिज कैपिटल के एंड इन्होंने सिक्योर किया RBI का लाइसेंस टू फंक्शन एज अ NBFC। जो ये इससे क्या होगा, NBFC से ये स्टूडेंट लोन्स ऑफर कर सकेंगे अप टू 2 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट नेम द इंस्टीट्यूशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के साथ टू ऑफर क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस टू द होम लोन बोरोवर्स। तो कौन सा है वो इंस्टीट्यूशन, वो है GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट अभी RBI ने एंड किन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया नेशन वाइड कैंपेन टू एनहेंस फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया, वो है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। नेक्स्ट एज पर RBI's न्यू फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस SROs इन द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम, मिनिमम नेटवर्थ क्या होनी चाहिए विद इन 1 ईयर ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ देम एज SRO। तो मिनिमम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपीज होनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द कंपनी जो कि फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर री इंश्योरर बन गई है इन इंडिया आफ्टर रिसीविंग R2 लाइसेंस फ्रॉम IRDAI। तो वो है वैल्यू एटेक्स री इंश्योरेंस लिमिटेड। नेक्स्ट ब्रिस्क पे एक्सचेंज जो कि है ब्रिस्क पे, इन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI इन मार्च टू एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। किसके लिए, फॉर क्रॉस बॉर्डर, राइट। एक होता है सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर, एक होता है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। इससे क्या होता है, आप बिटवीन कंट्रीज भी पेमेंट को सेंड एंड रिसीव कर पाएंगे इनके थ्रू, एंड सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर से विद इन इंडिया ही आप यही अचीवमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्च में RBI ने इम्पोज करा मॉनेटरी पेनल्टी ऑन JM फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड फॉर नॉन कंप्लायंस विद NBFC रेगुलेशंस। व्हाट इज द मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन JMFL। तो 3.1 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी यहाँ पे इम्पोज की गई है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पब्लिक सेक्टर बैंक दैट एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक को-लेंडिंग पार्टनरशिप विद पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इन मार्च, ताकि क्रेडिट एक्सेस को बूस्ट मिल सके फॉर अंडरसर्व्ड रूरल एंड सेमी अर्बन रीजन्स इन इंडिया। तो वो है पंजाब एंड सिंध बैंक। नेक्स्ट व्हाट इज द रिवाइज्ड टाइमलाइन सेट बाय सेबी इन मार्च फॉर कंप्लीटिंग राइट इश्यूज इफेक्टिव फ्रॉम 7 अप्रैल। तो 23 दिन की यहाँ पे टाइमलाइन सेट की गई है। नेक्स्ट अभी RBI ने साइन किया एक MOU किसके साथ, टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, जिससे बायलेटरल ट्रेड यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इंडिया एंड मॉरिशस के बीच में ये साइन की गई है, इंडिया के RBI एंड मॉरिशस के बैंक ऑफ मॉरिशस के बीच में, ताकि दोनों कंट्रीज की लोकल कंट्रीज में यहाँ पे ट्रेड करा जा सके। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द डिजिटल प्लेटफॉर्म जिन्होंने कोलैबोरेट किया सेबी SBI म्यूचुअल फंड के साथ टू लॉन्च जन निवेश, जो कि एक 250 रुपीज़ की SIP इनिशिएटिव है, जिसका एम रहेगा स्मॉल टिकट इन्वेस्टमेंट को इंडिया में प्रमोट किया जा सके। तो कौन सा है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म, वो है पेटीएम। नेक्स्ट अभी पेटीएम मनी इन्होंने रिसीव किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी अंडर विच कैटेगरी, तो रिसर्च एनालिस्ट कैटेगरी के अंडर इन्होंने यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिसीव किया पेटीएम मनी ने फ्रॉम सेबी सॉरी। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द प्रोग्राम प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 17 मार्च को टू एनहांस लोकल कैपिटल मार्केट्स, बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड सपोर्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन द पैसिफिक मार्केट्स। तो क्या नाम रहेगा उस प्रोग्राम का, ये पूछा गया आपसे। तो वो प्रोग्राम है फ्रंटियर सीड। नेक्स्ट नेम द डिजिटल प्लेटफॉर्म जिन्होंने पार्टनर किया सेबी के साथ इन मार्च टू हेल्प एड्रेस द इशू ऑफ अनक्लेम्ड एसेट्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट, तो वो है डिजिलॉकर। नेक्स्ट व्हाट इज द रिवाइज्ड मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड फॉर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेट बाय सेबी इन मार्च टू मेक इट मोर अफोर्डेबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स, तो 1000 रुपीज रहेगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स वॉज नॉट अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी बाय IRDAI, इनमें से संजीव सन्याल को यहाँ पे अपॉइंट नहीं किया गया था। नेक्स्ट उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताओ जो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च की गई फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर्स यूजिंग बड़ौदा कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, वो है बड़ौदा M डिजी नेक्स्ट कितनी पेनल्टी इंपोज की गई है RBI के द्वारा ऑन IDBI बैंक फॉर वॉयलेटिंग फेमा 1999 एक्ट, तो ये है 36.3 लाख रुपीस की तो इंपोज की गई है IDBI बैंक पर। एंड अगर मैं सिटी बैंक की बात करूं तो सिटी बैंक पर 36,28,000 की पेनल्टी यहाँ पे इंपोज की गई।
Next is our homework section, students. First question is, which is the cleanest city? Cleanest city under Swachh Sarvekshan for 24-25. Then second question, tell me Tracer's mission. What is the aim of this Tracer's mission? Launched by whom and what is the full form? I think day before yesterday also I gave this question, but hardly few students commented it. So I need to see maximum participation. This is important. Then third question we are talking about is, name that exercise that was held between India and Singapore recently. It was held in Jodhpur. Name that exercise and the edition of that exercise and who took part in this exercise from India. Fourth question, tell me recently, if I ask you who became, or tell me recently, what is the rank of India in the World University Games and which university secured the top position here and which country secured the top position in the medal tally. So these are your 4 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students. Okay, one more question. How much tariff USA has imposed on India recently and which sectors are exempted from it? Tell me that also.